इनोवेशन क्या आप लोग कर रहे हैं? कंपनियों को देखते थे कि डिफॉल्ट होती हैं, अब तो देश डिफॉल्ट होने की स्थिति पर आ चुके हैं। क्राइसिस में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नए मार्केट्स को हमें परस्यू करने चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश है जहां आपकी पूंजी केवल सुरक्षित नहीं रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी बढ़ोतरी भी होगी। देखिए संजय पुगलिया की खास मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। अभी ये जो पूरे देश में कैंपेन चल रहा है आधार का, ये UID अगर आ गया तो क्या ये बैंक में एक्सेप्ट किया जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे? ये सब आइडेंटिटी प्रूफ का पूरा ये मामला सॉल्व हो जाएगा। और हमको लगता है स्टेट बैंक भी कर रहा है UID। सो इफ आप इंटरेस्टेड हो, आप UID आधार में जुड़ जा सकते हो, तब आपको ये KYC का प्रॉब्लम नहीं होगा। मिस्टर संगमा, ये जो प्रॉब्लम है अप्रोच कैसे करें इनको, अगर आप ये बताएं कि ये कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं और किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं? ये जो आपका प्रॉब्लम है, बेसिकली काइंडली कम एंड मीट अस विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. We will solve your problem. We will get your problem solved. This is the assurance of a banking ombudsman. We will get your problem solved. Please come with the details. अगला सवाल लेते हैं मिस्टर आशुतोष सेन गुप्ता का। Now I have 5 accounts in 5 nationalized banks. I am proud of to be a customer of SBI Dishpur. In same Guwahati, I have other 4 accounts, and I find a lot of difference in the quality of service. Why, sir? I give you an example. From my pension accounts and other accounts, TDS are taken out by the bankers. Now, when I get TDS certificates from SBI Dishpur, within 15th of April every year, in some other banks, I should not name, this doesn't look nice. They are also bankers. Why should I name them? But in some other banks, I don't get it. I go and visit and request them. You see, my dear banker, I have to submit my income tax returns before 31st July compulsorily, or penalty will be imposed on me. Still, you see, they fail to give us TDS certificates. And one banker has given me on 26th of July, and the last day is 31st of July, to file your income tax return everywhere in India. Now, why this type of uniformity in quality of service, I don't know, sir. मिस्टर वर्मा, क्या ऐसा कोई रूल है कि कब तक TDS सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए? कम से कम उसके रिटर्न फाइल करने से पहले तो होना ही चाहिए सर्टिफिकेट इशू। TDS की बात कर रहे हैं जी? हाँ, लेकिन इनकी शिकायत है कि लास्ट डेट के अगर 4 दिन पहले ही सर्टिफिकेट आता है तो इन्हें आखिरी मिनट में दौड़ भाग करनी पड़ती है। Well, I apologize, sir, for intervention. Now, I have to go to the chartered accountant for filing the returns, and he needs 1 month's time to study all my accounts. This is not a very easy job, you see. And you cut my TDS every month, and you don't issue me the certificates till 26th of July, and you say that within 4 days my CEO will compile the return and I will submit it within 31st of July. I don't accept it, sir. I apologize. I beg your pardon, sir. Mr. Raja, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? Actually, if some bank or branch has told you, बाद में होगा, जुलाई में होगा बोलेगा, तो then you have to resort to that grievance redressal, procedure that is there in the bank. You have got to complain. You shouldn't wait, till we organize this kind of a meeting, because you will miss your date with the income tax, return filing. Regulation suggests that it has to be dispatched within 15 days for the end of the quarter. So that's what RBI says. Therefore, you have to lodge a grievance so that the bank corrects it. It could be one-off case. The bank should correct that. And only when you complain, give an opportunity, things will get corrected. मिस्टर संगमा, क्या बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से इसकी भी शिकायत हो सकती है कि इनको क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर, यानी 15 अप्रैल तक, अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ TDS का? ये केवल 15 अप्रैल नहीं है, लेकिन by 15th after every quarter, by the 15th day of the month after every quarter, you are supposed to be issued the TDS certificate. But they are not doing it. So you can complain. If they are not doing it,
please lodge a complaint with the bank grievances redressal mechanism. If you are not satisfied with their redressal, please lodge a complaint with the banking ombudsman. The banking ombudsman is here in front of you. We shall solve your problem. There is no uniformity in charging the locker rent. One bank is charging me 900 rupees, another bank is charging me 650 rupees per year. Why is it, sir? Very funny thing. No, I think each bank is permitted to levy the service charges in accordance with the schedule of service charges which they prescribe. So if for locker rent one bank feels that 650 is right, they will charge you 650 for that. Another bank is charging 900 based on its own costing or its own perception of what is the fair service charge to be levied. So I think the discretion has been given to the banks and they are levying charges accordingly. Next person to ask the question, we have a student here, Swagat Sangamai. My question is regarding education loan. We all know that it's very easy to get the home loan or car loan, but why is it so difficult to get the education loan? Last year only it happened to one of my friends that she went to SBI for education loan. She gave all the securities over there, all the mortgages, whatever they want. Everything she submitted over there, but still she was deprived of that opportunity to study in a very good colleges of India. एजुकेशन लोन किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं मिलता है. उसके लिए मैं एक सेकेंड मुझे कंप्लीट करने दो आप. एजुकेशन लोन्स जो मिलते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं प्रोग्राम्स, राइट? तो हर किसी कोर्स को परस्यू करने के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिलता है. इसीलिए मेरा आपको इस तरीके से बता पाना संभव नहीं होगा. आप मेरे ऑफिसर को डिटेल्स बताएं उस केस के, जो भी होगा हम आपको बताएंगे. अगर हमसे गलती हुई है तो हम उसका सुधार करेंगे. Welcome to the exciting